Hello, good morning to all. So today we are see the interview question of C sharp. So we don't waste our time. We focus on our questions quickly. So first, C sharp went into preparations. What is a C sharp? It's a basic question coming in interview. C sharp is an object-oriented programming language developed by Microsoft. C Sharp is used with .NET framework for creating website applications and many more. C Sharp एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि .NET फ्रेमवर्क पे बेस्ड है, ठीक है। और इसके साथ हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस, ठीक है, अपनी जो वेबसाइट्स होती हैं वो आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। हम फॉर्म्स क्रिएट करके हम डेस्कटॉप लेवल एप्लीकेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास लिंक। लिंक क्या होती है? लिंक इन C Sharp is used to work with data sets from sources such as object, datasets, SQL Server, and XML. Links stand for the language integrated query. Link is data querying API with SQL-like query syntaxes. Link is structured query syntax built in C Sharp VBNet to retrieve the data from different type of data sources such as collection, ADO.NET databases, XML docs, web services, and SQL server and other databases. बेसिकली जो हमारी लिंक किया हुआ है ये हमें एक ऐसी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है जिसके साथ हम अपने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो डाटा सेट्स होते हैं, जो SQL सर्वर का डाटा है, हम उससे एक्सेस कर सकते हैं। हमें जाके डायरेक्टली है जो हमारी क्वेरीज हैं वो हमें SQL में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज जो कि लिंक है हमारी, इसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, हम इसके साथ इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ये बेसिकली हमें क्या करती है, API प्रोवाइड करती है जिसमें हम SQL लाइक जैसे SQL के सिंटैक्स होते हैं वैसे ही सिंटैक्स होते हैं इसके, और वैसे ही हम उसके साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर। ये हमारे पास मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रिंग इज अ म्यूटेबल immutable type. Immutable means if you create a string object then you cannot modify it, but we can say many of the people say we can change it, but there is a logic behind that. If you change in it then it creates new memory, and our main memory it takes place at there. So our string is immutable type. Immutable means once is created the object memory then we cannot modify it. Just like their example, string value, that's a string name, and that's our hello visitor is a string. So our addition to it, just like we say concatenation to it, how are you, ठीक है। That's why when we change in it then at here place it creates a new object in our main memory, and it at here he fill with that hello visitor plus how are, and when after here when coming to at this point then it also create a new object in our main memory. For this type of problem to overcome, we have a concept of string builder. String builder is basically a mutable data type. Means if we create string builder object then you can perform any operation like insert, replace, or append without creating a new instance for every time. It will update string at one place in memory, does not create new space in memory. दैट मीन द स्ट्रिंग बिल्डर हमें हेल्प करता है कि जैसे इसमें हमें बार बार मेमोरी इनिशियलाइज हो रही थी, ठीक है, वो क्या करता है एक ही बार में अपनी जो मेमोरी होती है वो उसको रख लेता है और उसी में ही हम अपेंड करी जाते हैं। जस्ट लाइक अ लिस्ट,
ये लिस्ट की तरह काम करता है, बिकॉज ये एक म्यूटेबल डाटा टाइप है, जो स्ट्रिंग है हमारी इम्यूटेबल डाटा टाइप है। दोनों के बीच में यही एक बिग डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग बिल्डर सब एस बी माई वैल्यू इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ऐसे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और उसमें इस अपेंड फंक्शन की हेल्प से हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी एक कंकैटिनेशन कर देंगे। और जब हमें इसमें से अपनी स्ट्रिंग वैल्यू निकालनी है तो ये हमारा टू स्ट्रिंग जो मेथड है ये हमें हेल्पफुल होता है। जो इसका स्ट्रिंग बिल्डर होता है ना, इसको हम कन्वर्ट करते हैं टू स्ट्रिंग में। सो व्हाट इज म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप्स एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस? सो this question is also very important. Mutable and immutable are the English two words that mean can change or cannot change. ठीक है, means the mutable types are those whose data members can be changed after the instance is created. Immutable data types are those whose instance are once created then cannot change. At here we have a string, at here we have a string builder, just like you think like that. When we change the value of a mutable objects, value is changed in same memory, but in mutable type the new memory is created and the modified value is stored in new memory. जो हमारे पास इम्यूटेबल होती है उसमें जब हम कोई न्यू वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो वो एक नई मेमोरी ले लेती है। जो इम्यूटेबल है वो उसी मेमोरी में ऐड कर देती है जो म्यूटेबल है। अब इसको जो म्यूटेबल है वो कौन सी हमारी स्ट्रिंग बिल्डर है, जो इम्यूटेबल है वो हमारी स्ट्रिंग है। oops tells for oops concept name and tell about abstraction and encapsulation. And abstraction and encapsulation are the two important topics for our interview. Oops is concept of the modern programming language that allows to program to organize the entities and object. Entities means just like a car, just like जो किसी भी पर्सन का नेम हो गया, कोई भी चीज होगी, वो सारी हमारी एंटिटीज हैं। ठीक है, और जो इनके जो होते हैं हमारे पास वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। Just like human is an object and motherboard, these all are the objects. And the object oriented programming language is a programming model where the program are organized around objects and data rather than action and logic. Oops allow decomposition of problem into number of entities called object. जब number of entities आ जाती हैं, ठीक है, उसको हम objects कह देते हैं। then builds data and function around these objects. ठीक है, तब हम उस डाटा को बिल्ड करने के लिए फंक्शंस बना देते हैं। The four concepts of oops are abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. Abstraction में हम to represent the essential feature without representing the background detail. हम इसमें बैकग्राउंड डिटेल के बारे में नहीं बताते, सिर्फ उसके जो एसेंशियल फंक्शंस हैं सिर्फ उन्हीं को बताते हैं। इसके लिए हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट क्लास भी होती है इसमें C# में हमारे पास। एनकैप्सुलेशन, हम जब डाटा को बाइंडिंग करके रखते हैं उसको हम एनकैप्सुलेशन कर देते हैं। ये देखिए, डिफाइंड एज दी रैपिंग ऑफ डाटा अंडर सिंगल यूनिट। जब हम डाटा को रैप करके रख देते हैं एक सिंगल यूनिट में तो उसको एनकैप्सुलेशन कहते हैं। इनहेरिटेंस, inherit the property from the parent class or base class to the derived class, that's our inheritance. And polymorphism is a many form, poly means many and morphism forms, and that means the one function can do many things that like just like at here is of polymorphism is a two type of polymorphism. I will show you. Just one is a compile time polymorphism and another is a runtime polymorphism. In compile time polymorphism we have a method overloading and operator overloading. In method overloading, just like we have a function of add. At here we pass the parameters, two parameters. At here we pass a three parameters.
At here we pass 4 parameters, and we change at here is also a type. Then that's our method overloading. Because this name is same and the parameters are different, so we override, just like a override, but it's not an override because we not override that function at here. We just create a similar type of function, so it's a method overloading. We overload the functions with the help of change the parameter. These conditions are at mentioned here: by changing the number of parameters used, by changing the order of parameters, by using different data types of parameters. These are the 3 things which are using in method overloading. One is by changing the number of parameters. When we change the number of parameters, and just like at here 2 and at here with 3, and by changing the order of parameters, just like at here we int a, int b, and we just like create a similar of that, and we initialize int b and int a. This is also valid. And by using a different data types for a parameters, we also initialize the different types, just like at here float, and at here we int define. That's method overloading. This is a compile time polymorphism. Compile time means is when compile the program, then it's run. Operator overloading, just like addition operator, we use it for the addition of 2 numbers. We also use the for concatenation purpose. This is a good example of operator overloading. You can I read the definition. Operator overloading gives the ability to use the same operator to do various operations. Just like I earlier said that the plus operator is used for a concatenation and and for the addition purpose. It provides additional capabilities to C# operators when they apply to the user defined data types. It enables to make under user defined implementation of various operations where one or both of the operands are of the user defined class. Next we have a topic of under polymorphism is a runtime polymorphism, in which we have a overriding method overriding. We have a runtime means runtime polymorphism happen at runtime. Runtime means when our program is running, then it's happen. Not when we compile the code, then it is not happen. When this program is our running, then it's happen. Runtime polymorphism can be used in method overriding, just like said earlier. For that purpose, we use a virtual keyword in our base class, and in our derived class we use a override keyword. So for that purpose, if anyone say you can overriding method without a class, so you can simply say that's not possible, because in which we just override the previous class of function according to our need. It's like at here, creating the method of derived class with the same name, same parameters and same return type, just like public, return type, name, public, return type and name. These all things are same and not within the same class. उसने ये भी बोल दिया, भी वो सेम क्लास में नहीं होना चाहिए, where the method is declared only those methods overridden in the derived class declared in the base class using the virtual keyword or abstract keyword. जो abstract keyword और virtual keyword के साथ होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को ही इसमें override कर सकते हैं. Some of the FAQs on polymorphism are: first question है, can method overloading have
the same number of parameters with different return type? No, because conflicts the occur in method in the parameters. What is operator overloading? We can redefine the operators like plus, minus, multiply with additional functionalities. Just like I earlier told you, this addition operator is used for concatenation and the sum of two numbers or multiple numbers, and that is used. Difference between virtual method and abstract method. Virtual method, we can implement the virtual method inside the abstract class. Abstract method does not have any implementation. जो abstract methods होते हैं उनकी कोई हमारे पास implementation होती नहीं है. It is not mandatory to override virtual method in base class. क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, उन्हें हम ओवरराइड करेंगे क्योंकि वर्चुअल मेथड हमारे उसमें डिक्लेयर हुए हैं. दैट मीन्स हम इसको अगर डिक्लेयर भी नहीं करेंगे, हम अपनी जो हमने ड्राइव्ड क्लास है, तब भी हमारे जो हमारा प्रोग्राम है वो वर्किंग फाइनली चलेगा. जो हमारा ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इट मस्ट टू बी ओवरराइड. इसको हमें ओवरराइड करना ही करना पड़ेगा और इसकी जो हमें बेसिक डिटेल है इसमें हमें लिखनी ही पड़ेगी क्योंकि हमने इसमें पहले इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताई होती. अब हमारे पास आ गया डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग. ओवरलोडिंग, creating a multiple method in a class with the same name but different parameters is type called method overloading. And method overriding, creating the method in a derived class with the same name and the same parameter, same return type in the base class is called method overriding. At here I show that is our overriding and that is our overloading problem which we discussed earlier. Now we have a ref and out keyword in our C#. The out is the keyword in C# which is used for the passing the argument to the method as reference type. It is generally used when a method returns multiple values. It is basically used when a method returns a multiple values. The out parameter does not pass the property, in which we not pass the properties because in which we just method as a reference type, because ये एक reference type है. Ref is a keyword in C# which is used for passing the argument by a reference. By a reference we pass the argument, or we can say that if any changes made in this argument in this method we reflect in the variable when the control return to calling method. The ref parameter does not pass the properties. So now next question we have a what are collection and give example. Collections. C# includes specialized classes that store series of values or objects called collections. जब हम C# में हम सीरीज ऑफ वैल्यूज को स्टोर करते हैं, इसके लिए हमारे पास इसमें स्पेशल क्लासेस हैं, ठीक है, उनको हम कलेक्शंस बोल देते हैं. कलेक्शंस दो तरह की हमारे पास, नॉन जेनरिक और जेनरिक. जो नॉन जेनरिक हैं कलेक्शंस हैं वो सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक नेम स्पेस में है. ये बेसिकली हमारी जेनरिक हैं. जो नॉन जेनरिक हैं वो हमारी सिस्टम डॉट कलेक्शंस में है. It recommend is used to generic collection because they perform the faster non-generic collections and also minimize the exception by
giving the compile time errors. So that's our generic collections. Just like we have a list, and at here we define the generic list, in which we not define a data type. So that means it's a generic. If we define that here is an int, then it is a our non-generic. The basic difference of between two generic and non-generic is, in generic we don't define a data type when we declare, and in non-generic we define a data type. It's like we list, it's automatically grow as you add the element in it. आगे आगे हमारी डिक्शनरी, जो लिस्ट है हमारी ये जेनरिक भी हो सकती है, ये नॉन जेनरिक भी हो सकती है। आगे आगे हमारी डिक्शनरी, डिक्शनरी में की और वैल्यूज होती है हमारे पास, कंटेन की और वैल्यू पेयर्स। उसके बाद आ जाती है सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है, इसमें भी की और वैल्यूज होती हैं, ठीक है। इट ऑटोमेटिकली एड्स द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर बाय की के द्वारा ये उसको कर देता है। उसके बाद आ गया हमारे पास क्यू स्टोर्स, just like we know that queue use the FIFO style for first in first out. It keeps the order the values were added. It provides the our two method NQ and DQ. By the NQ we add in it the values, and by the DQ method we can retrieve the values from it. And the, next is our have a stack. Stack is also a non-generic, stores the value as a LIFO, or we can add here as a show as a int, and this, and then we can store only the integer type of values, in which we have a push, pop and peek. Peek is used for the topmost value, and push is used to putting the element in our stack, and pop is removed the last element from our which we put at the last, that is helpful for retrieving. And hash set contains a non-duplicate elements. It eliminates the duplicate elements. So as clear you now just from the definition, it's not show the duplicate elements. So next is our non-generic collections: array list, sorted list, stack, queue, hash table, bit array. Sorted list just clear we in the previous, just like at here, sorted list, key and value pairs. And array list stores the object of any type of like array. However, there is no need to specify the size of array list, like within an array it's grow automatically. So that's the main benefit of that. We know it define the size of it. So next is our sorted list. Sorted list is a key value pair, automatically arrange sending order. Default is C# both the generic and non-generic sorted list. Stack, just like we previously in push, pop and peek is our three methods in it, and Q, NQ and DQ is for our two methods. NQ is for addition and DQ is for removal the element from it, and the FIFO is used in it. And next is our hash table. Hash table stores keys and value pairs. It receives the value by comparing the hash values of the keys. It is basically fast as compared to Q. Bit array manages a compact array of bit values which are represented as boolean, where true indicates that the bit is on 1 and false indicates the bit is of 0. Basically it's stored for 0 and 1. Class and objects. So that's a basic question. What's class? Class is a blueprint of an
object that contains the variables for storing data and functions to perform operations on the data. The software is divided into a number of small units called objects. The data and functions are built around these objects. When an object is created using the new operator memory allocated for and class in the heap, the object is called an instance. Its starting address will be stored in the object in stack memory. जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा एट द एंड हमारा स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है. उसके बाद आ गया हमारा abstract class and interface. Abstract class. An abstract class is a way to achieve the abstraction. In C#, an abstract class never intend to be initiated directly. It's like we learn at there is abstraction. I will show you at here to represent the essential feature without representing the background details. So that means is in which we just show the essential information rather than detail. So an abstract class is never intended to be initiated directly. This class must contain at least one abstract method which is marked by keyword or modifier abstract in the class definition. It's like we abstract class we mention, and we have a one in which we have one abstract method is also present. Abstract classes are typically used to define a base class in the class hierarchy. Now next is our interface. Interface can have methods, properties, events, and indexes as its member. Interface will contain the only declaration part. The implementation of interface members will be given by the class whose implements or who inherited it. Difference between abstract class and interface, just like sorry, I miss, is implicitly and explicitly. By implicitly you directly inherit the interface, just like we have a class, we inherit the simple inherit a interface, and explicitly we through another class we inherit a interface. We can also we also define of that we can interfaces and abstract class difference. Interfaces support multiple inheritance. So we can, if anyone ask a question, then how you can achieve multiple inheritance in C#, then you easily say that with the help of interfaces. Abstract classes does not support multiple inheritance. Interface does not contain data members. Interface के अंदर data members नहीं होते, classes के अंदर होते हैं. Interface does not contain constructors. Constructors भी नहीं होते इसमें होते हैं हमारे पास, बिकॉज ये जस्ट हम इसमें डेफिनेशन लिखते हैं उसकी, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, सो उसमें कंस्ट्रक्टर्स नहीं होते. एंड इंटरफेस कंटेन्स ओनली इम्प्लीमेंट incomplete member signature of member. The abstract class contain both incomplete और complete members. Just like जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम जस्ट उसमें अपने डिफाइन करते हैं, जस्ट वी नॉट इम्प्लीमेंट, बट इन abstract class भी हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और ऐसे भी खाली भी छोड़ सकते हैं.
An interface cannot have access modifier by default. Everything is assumed as public. An abstract class can contain access modifier for subs, functions, and properties. Member of interface cannot be static. Only incomplete members of abstract class be static. जो हमारे मेंबर ऑफ इंटरफेस होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते, जो ऑब्जेक्ट के होते हैं उसमें हमारे पास ओनली जो कंप्लीट मेंबर्स हैं वो स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक का मतलब ये है कि हम जो अपनी मेमोरी होती है हमारे जो कोड की, जब हम उसको रन करते हैं तो वो सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज होंगे, वो बार बार इनिशियलाइज नहीं होते। वो उस कोड को बार बार यूज कर सकते हैं बट इनिशियलाइज नहीं करेंगे मेमोरी में। सो इसके साथ हमारी मेमोरी एंड परफॉर्मेंस दोनों अच्छे होते हैं। Next is our scopes. The part of program where a particular variable is accessible is termed as scope of that variable. C# scope rules of variables can be divided into three categories as follows: class level scope, method level scope, and block level scope. Declaring a variable in a class but outside any method can be directly accessed anywhere in class. Declaring a variable in class but outside any method can be directly accessed anywhere in class. These variables are also termed as field or class members. जो हम अपनी क्लास में वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं डायरेक्टली, उसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं विद इन मेथड्स, जो क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं उसमें भी, और जब जहाँ भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ रही है तब वहाँ भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास मेथड लेवल स्कोप। वेरिएबल दैट हैव डिक्लेयर इनसाइड अ मेथड हैव मेथड लेवल स्कोप। दीज आर नॉट असेसिबल आउटसाइड द मेथड। ये हम आउटसाइड मेथड के बाहर इसको यूज़ नहीं कर सकते, जस्ट हम मेथड के अंदर अंदर कर सकते हैं। हाउ एवर दीज वेरिएबल्स कैन बी असेस्ड बाई नेस्टेड कोड ब्लॉक इनसाइड अ मेथड। जबकि हम जो इसमें अंदर जो ब्लॉक बनाए होते हैं हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक अभी हमने उसमें एक फॉर लूप बना ली, हम उसमें यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास ब्लॉक लेवल। These variables are generally declared inside the for while the statement. These variables are also termed as the loop variable. Loop variable statements variables, they limited their scope up to the body of the statement in which it declared. सो जैसे कि मैं आपको बताया हमारी जो फोर लूप्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर हमने जो भी अपना कोड लिखा है और जो भी चीज़ हमने इनिशियलाइज कर सके है हम सिर्फ उसको वहीं तक ही यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, हम उसको आउटसाइड नहीं यूज़ कर सकते। सो उसके लिए हमारा ये होता है ब्लॉक लेवल स्कोप। जो हमने मेथड के अंदर यूज़ कर लिया उसको हम मेथड में और ब्लॉक में, जो उसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। जो क्लास लेवल होता है हम उसको मेथड में भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल में भी यूज़ कर सकते हैं। जो ब्लॉक लेवल है उसको हम सिर्फ ब्लॉक लेवल में यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा इसका स्कोप का फंडा। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल वर्सेस डायनेमिक वेरिएबल टाइप्स। You can store any type of value in a dynamic data type variable. Type checking for these type of variable takes place at runtime. The object type is the ultimate base class for all the data types in C# common type system. The object is an alias for system object class. The object types can be assigned values for any other types, values, reference type, predefined, user defined types. Dynamic types are similar to object types except that type checking for the object type variables takes place at compile time, whereas
दैट फॉर द डायनेमिक टाइप एट द रन टाइम प्लेस। जो डायनेमिक होते हैं वो हमारे रन टाइम पे होते हैं, जो हमारे जो ऑब्जेक्ट टाइप है ये हमारे होते हैं कंपाइल टाइम पे। ठीक है, बिकॉज इसमें हम रेफरेंस टाइप्स होते हैं हमारे पास, इसको इनिशियलाइज करते हैं। सो ये जो भी हम करते हैं ये सारा हमारा कंपाइल टाइम पे होता है, और उसका जो कीवर्ड है ऑब्जेक्ट है, और इसका हमारा डायनेमिक कीवर्ड है। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे लिस्ट। Array lists are not strongly typed. Strongly typed means just like we initialize int type value, then we want to just store only the integer values, not we add in that the values just like string or any boolean type values not in it. So that's our strongly typed values. And in array list we array list are not a strongly type, but list is a strongly type. In array list it can store any type of data. We don't have to specify the type of data it is going to store. हम इसमें किसी भी तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं। इन लिस्ट वी स्पेसिफाई टाइप, जिस टाइप का हमने डाटा स्पेसिफाई किया हम उस टाइप का डाटा स्टोर करेंगे। जो सिस्टम डॉट कलेक्शंस होते हैं उसमें ये होती है हमारे पास एरे लिस्ट, एंड जो लिस्ट है हमारी ये हमारे पास होती है सिस्टम कलेक्शन डॉट जेनरिक्स में। और जो एरे लिस्ट नीड बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, एंड नो नीड हेयर वी हैव बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। Boxing means we convert the value from a value type to our reference type, and unboxing we reference type to the value type values we convert in it, and then we add the end, just like we dot to string method is used when we using the string builders in it. But in it we use in which we have a unboxing method that's used for converting our reference type to value type values. Here's the element are stored as the object type. इसमें हम जो भी हम स्टोर करते हैं वो सारे ही ऑब्जेक्ट की सूरत में इसमें हम स्टोर करते हैं। और जो here the data type is stored strongly typed is given the generic parameters. इसमें जो भी हम स्टोर करते हैं वैल्यूज वो सारी की सारी हम उसका जो डाटा टाइप होता है उसी नाम की स्टोर होती है। जैसे कि अब आ गया हमारे पास एरे लिस्ट के एग्जांपल। इसमें एक एरे लिस्ट लिया है, उसने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पे, ये न्यू एरे लिस्ट यहाँ तक। उसके बाद ये माई एरे जो हमने क्रिएट किया था उसके साथ हमने ऐड का फंक्शंस को कॉल कर लिया, उसमें हमने डॉट नेट ऐड कर दिया और फिर हमने इसमें 100 वैल्यू ऐड कर दी। ठीक है, फिर उसमें हमने इंट ले लिया सम 0 फॉर ईच लाई, हमने उस पर 0 से लेके माई एरे तक। बिकॉज ये हमें ये शो नहीं करेगा भी हमें कहाँ तक जाना है, क्योंकि हमने यहाँ तक ये हमारा कंपाइल टाइम तक सही बताएगा ये हमें, बट हमें ये रन टाइम पे एरर देगा। बिकॉज इसमें हमने इस जो भी वैल्यूज हैं हम उसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते कि वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और वी कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज ऑल्सो हैं, बट जब भी हम इसमें स्टोर करेंगे तो वो एज ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे और ऑब्जेक्ट कभी भी ऐड नहीं होते। ये स्ट्रिंग आ गई, ये स्ट्रिंग टाइप का हमने एक लिस्ट ले ली, इसमें जैसे हमने एक स्ट्रिंग डाल दी, फिर ये भी दूसरी ये कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये हम इसमें इंटीजर पास कर रहे हैं। ठीक है, explain thread and multi-thread. A process represent an application where a thread represent a module of application. Process is heavyweight component whereas thread is a lightweight.
process of representing an application, whereas the thread represent a module of application. The process is heavyweight component, whereas the thread is lightweight. जो प्रोसेस है वो हैवी वेट कंपोनेंट होता है, जो थ्रेड है हमारा वो लाइट वेट कंपोनेंट है. with the help of thread in terms of lightweight sub processes, and because it is executed inside the process, ये प्रोसेस के अंदर होती है, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट करने में लिए मल्टीपल थ्रेड्स आर साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, ठीक है, टू अचीव द मल्टीटास्किंग. इट हेल्प्स, इट सेव्स द टाइम because multiple tasks being executed at a time, and to create a multi-thread application we use system.threading namespace. The good example of multi-threading is IDM, in which we add here 32 packages when it's helpful for downloading in high speed. Now next comes exception. Exception is the problem that arises during the execution of program. C# exception is a response to exceptional circumstances that arise while a program is running, such an attempt to divide by zero. एक्सेप्शन एक तरह की प्रॉब्लम होती है जो कि हमें एग्जीक्यूशन के टाइम पे आती है, ठीक है. ये इन्होंने एक एग्जांपल बताई है, जैसे कि डिवाइड बाय ज़ीरो, ठीक है. और ये तो एक एग्जांपल बताई है जिससे कोई एरर आ रही है, हमने एक्सेप्ट करके चलाना है, ठीक है. उसमें अगर ये एरर आए तो ये कर दो, ठीक है. जैसे कुछ स्किप करना है अगर हमने कुछ, तो ये कर दो, ठीक है. तब हम कर सकते हैं उसके साथ. तो इसके लिए हमारे पास इसमें ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है. जैसे ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो. ट्राई, इन ए ट्राई ब्लॉक identifies a block of code for which particular execution is activated. It is followed by one or more catch blocks. ट्राई ब्लॉक क्या करता है, जब भी हमारे पास जो कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करेगा वो, ठीक है. जो भी कोई एरर आए, ठीक है, वो जो भी इसके रिलेटेड एरर होगी कैच ब्लॉक के, ठीक है, वो उसको दे देगा. हम कैच ब्लॉक एक और मल्टीपल बना सकते हैं. जो कैच ब्लॉक होता है, बट जो फाइनल ब्लॉक होता है हमारा वो एक ही होता है. जो कैच ब्लॉक है, एक प्रोग्राम कैचेस एन एक्सेप्शन विद exception handler at the place in a program where you want to handle the problem. And the catch keyword indicates the catching of an exception. Finally, the finally block is used to execute a given set of statement, whether an exception is thrown or not thrown. For example, if you open a file, it must be closed at the end. So program throw an exception when a problem shows up. This is done using throw keyword. So ये थे हमारे पास 4 ब्लॉक. जो ट्राई है इसमें हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है. अगर कोई एरर आ गई तो हम उसको थ्रो कर देंगे, ठीक है. वो थ्रो कीवर्ड के साथ इसके पास अगर जो भी कैच ब्लॉक होगा, ठीक है, उस एरर के रिलेटेड वो उस कैच के पास, कैच ब्लॉक के पास जाएगा और वहाँ पे हम उस एरर को हैंडल कर लेंगे. हैंडल करने के लिए हमने वहाँ पे कोड लिखा होगा, ठीक है. तब हमारा वो वाला कोड चल जाएगा, ठीक है. जो फिर वो दोबारा ट्राई ब्लॉक के पास आ जाएगा, फिर दोबारा चल देगा वो. फिर एट द एंड जब हमारा ये सारा काम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमारा फाइनली ब्लॉक चल जाएगा. और जैसे कि इसमें बताया है, ये जब हमने फाइल ओपन की है जस्ट लाइक ट्राई ब्लॉक में, ठीक है, और उसमें कोई एरर आ रहा है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड, देन वी गोइंग टू कैच ब्लॉक, ठीक है. एंड एट द एंड व्हेन वी ओपन अ फाइल in the catch block, we handle that exception, and then we have get the access of that, and at the end we just in the finally block we
End of data says. Exception classes in C sharp. C sharp exceptions are represented by classes. The exception classes in C sharp mainly directly or indirectly derived from the system.exception class. Some of the exception classes derived from the system.exception class, the system.application exception and the system.system exception class. What is a constructor? A special method of class that is automatically invoked when an instance of the class is created is called constructor. The main use of constructor to initialize the private fields of a class while creating an instance of for the class. The main use of constructor to initialize the private fields of the class while creating the instance for class. When you have not created a constructor in the class, the compiler will automatically create a default constructor of the class. The default constructor initialize all the numeric field in the class to 0 and all the string and object field to null. हमारे जो होते हैं उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज उनको 0 कर देगा, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट को नल कर देगा. ये ऑटोमेटिकली चलता है कंस्ट्रक्टर. बेसिकली ये जब हम अपने उसको इन्वोक्ट करेंगे ना, जब हम क्रिएट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को, तब वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देता है. C sharp constructor can be divided into 5 categories. One is default, parameterized, copy, static and private. Special method class is automatically invoke the instance. The class is called when class is instance of a class is created, then it's called constructor. So ये रहा हमारा. Some of the key points regarding constructors are: a class can have number of constructors, does not have any return type, not even void. कोई रिटर्न टाइप नहीं होती इसकी, ठीक है. स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी पैरामीटराइज्ड. जो स्टैटिक होंगे वो पैरामीटराइज्ड नहीं होंगे. विद इन अ क्लास यू कैन क्रिएट ऑन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ओनली. एक क्लास के अंदर सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर जो होगा स्टैटिक होगा वो क्रिएट कर सकते हैं. वैसे आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, बट एक स्टैटिक सिर्फ एक ही होगा. जो एरे लिस्ट है तो हमने कर ही लिया. जो एरे फिक्स लेंथ है, इसकी वेरिएबल लेंथ है, ठीक है. ये कंपाइल्ड स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ कलेक्शंस है, ये फ्लेक्सिबल है बिकॉज इसमें हमारे को डाटा टाइप की कोई लिमिट नहीं है, इसमें डाटा टाइप की लिमिट है, ठीक है. बिकॉज एरेज आर ऑफ फिक्स्ड size and strong type collection, performance is faster. In array list lot of boxing and unboxing are done. There is the performance is slow. इसमें performance slow है, इसमें performance fast है. So next part we we learn in next video. So thank you guys for watching this video. I hope you enjoy this and we learn many things in that session. So thank you guys for watching this video.